नमस्कार आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज ये वीडियो रे मु आपण मान सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर रो हिस्ट्री जेई रो यूनिट 2 रो कंसोलिडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इंडिया रेस्पॉन्स रो 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी। ता पूर्व मु यूनिट 1 रो ऑलरेडी 1 मार्क्स क्वेश्चन आपण सहित शेयर करछि। आउ वीडियो आगे कहबी जे आपण माने यार पीडीएफ किते भाबे पाई परिबे। तो चलो तो स्टार्ट करबा। द रिबेलियस सन्यासी बिलोंग्स टू डेस कैट। तो कौन ना दासमिन नाग आउ गोसानी। तो कौन द रिबेलियस सन्यासी बिलोंग्स टू कैस्ट को कैस्ट आसले ना दशमी नाग गोसानी कैस्ट रु से माने बिलोंग्स करथिले। This was the author of आनंद एटा मठ आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी was the author of आनंद मठ। तो यह बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बंगाल बा बेंगल ए ग्रेट फेमाइन टुक प्लेस इन डेस 1770। 1770 बंगाल रे एक ग्रेट फेमाइन टुक प्लेस होतिला। नेक्स्ट, शंकराचार्य हैज एस्टाब्लिश डेस मठस इन इंडिया। शंकराचार्य केतुटा मठ को एस्टाब्लिश करथिले इंडिया रे भारत रे ना 4टी। During rebellion, the sannyasi went to dash through the hill and forest from India, Nepal. During rebellion, the sannyasi went to Nepal through the hill and forest from India. Next question, dash suppose the rebellion at Halsipur. तो कौन Captain Welding suppressed the rebellion at Halsipur. Our national song is कौन वंदे मातरम। आम नेशनल सॉन्ग है कौन ना वंदे मातरम। द संताल सेटलमेंट वाज नोन एज दिस धामिन आइको। द संताल सेटलमेंट वाज नोन एज धामिन आइको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जमींदार्स वेर नोन एज बाय संतल्स एज दिकु। तो जमींदार वेर नोन एज संतालस वाज दिकु। In this year, Kanhu and Sidhu revolted against the British। 1855 रे 1885 रे कान्हू और सिद्धू इंग्लिश सरकार ब्रिटिश सरकार मध्य कौन रिभोल्ट पुणी थे करते। डेस इन डेस प्लेस ऑफ वेस्ट बेंगल चित्तू सांताल रिभोल्टेड मालदा। इन मालदा प्लेस ऑफ वेस्ट बेंगल मालदा जगह जितू सांताल रिभोल्टेड माने जितू सांताल विद्रोह करते। इन डेस ईयर रयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन मद्रास। तो रयतवारी बंदोबस्त मद्रास केबे इंट्रोड्यूस है ना 1820 मसीह रयतवारी सिस्टमटा मद्रास रे इंट्रोड्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन डेस ईयर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट केबे करथिले ना 1793 मसीह लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट को कौन इंट्रोड्यूस करथिले। द सनसेट लॉ वाज एप्लीकेबल इन डेस। द सनसेट बा सूर्यास्त आईन कौन ना परमानेंट सेटलमेंट भाव एप्लीकेबल होता। इन उत्तर प्रदेश डेस सिस्टम वाज प्रिलिवेंट महल। तो उत्तर प्रदेश महल सिस्टमटा बंदोबस्त चलता। डेस हार्ट स्टार्टेड द रयतवारी सिस्टम को किए स्टार्ट करते ना सर थॉमस मुनरो हार्ट स्टार्टेड द रयतवारी सिस्टम। द कंधोस फ्रॉम डेस जॉइन द पाइक रिबेलियन घुमसार। द खंडस फ्रॉम घुमसार जॉइन द पाइक rebellion. Next, the Great Revolt of 1857 has been termed as the Sepimunti by the historian and colonial historian. The 1857 revolt was war of independence against the British has been told by Surendranath Sen. This had introduced the dual government. Robert Clive had introduced the dual government. This had introduced permanent settlement. The permanent settlement came to Lord Cornwallis. Before the infiled rifle, the rifle was used by British in India brown breast। तो infiled rifle जो राइफल थिला infiled rifle पूर्व brown breast rifle को हाथ व्यवहार करथिले। नेक्स्ट, मंगल पांडे वर्क अस सिपाही एट बैरकपुर। मंगल पांडे वर्क अस सिपाही एट बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज डिक्लेयर्ड एज एम्पायर ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। बहादुर शाह टू डिक्लेयर्ड as empire during the Great Revolt 1857. This guided the revolt of 1857 to Bihar। Conwar Singh guided the revolt 1857 to Bihar। तो Conwar Singh और बिहार जो रिवोल्ट विद्रोह होता है कौन गाइड करते। This was the last governor general first viceroy।
Okay, now Lord Canning was the last Governor General, first viceroy. In this the year, the East India Company rule end in India. भारत को 1858 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करथिला से भारत को समाप्त होइतिला. In this Darbar, the proclamation of Queen Victoria was read. In Allahabad Darbar, the proclamation of Queen Victoria was read. Next question. In year days रईद्वारी सिस्टम स्टार्टेड इन माड्रास. तो 1820 मसीह को रईद्वारी सिस्टमटा माड्रास रे प्रचलित होइतिला. सेहीपर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड कोन परमानेंट सेटलमेंट केबे करला 1793 मसीह लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट करथिले. द सनसेस्ट लॉ वाज एप्लीकेबल इन परमानेंट सेटलमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन उत्तर प्रदेश देश रेवेन्यू सेटलमेंट वाज प्रिविलेंट. इन उत्तर प्रदेश महलबारी रेवेन्यू सेटलमेंट वाज प्रिविलेंट. Lord Dalhousie abolished the title and pension of this, the adopted son of Peshwa Bajirao to Lord Dalhousie abolished the title and pension of Nana. The Lord Cornwallis को नाना साहब को जो टाइटल थिला पेंशन थिला ता कोन अडॉप्ट ऑफ पेशवा बाजीराव टू सेरा कोन अबोलिश कर देथिले कि ना लॉर्ड डेलहाउसी. देश वाज ए ब्राह्मण सिपोई ऑफ बेंगल regiment stationed at Barakpur who killed a British military officer in his rifle in 1857. Mangal Pandey was a Brahman Sipai of Bengal regiment stationed at Barakpur who killed a British military officer in his rifle 1857. तो मंगल पांडे जो ब्रिटिश सिपाही को मार देथिले तो सेटा होइछि. Days and Days were two leaders of Odisha फेमस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट 1857. माने ओडिशा दुईटी के फेमस लीडर जो माने कि 1857 विद्रोह रे पार्टिसिपेट करथिले आ बहुत फेमस होतिले कि ना सुरेंद्र साहे आ चक्की खुंटिया. This was the minister of Nana Sahib who fought against the British 1857 revolt. Tantia Tope was the minister of Nana Sahib who fought against the British in 1857. This was the last Mughal empire who fought against the British governor in revolt of 1857. Bahadur Shah II was the last Mughal empire who fought against the British governor in revolt of 1857. तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल एम्पायर थे जी कौन ब्रिटिश सरकार सहित रिवोल्ट करते कि 1857 मसीह. ऑन डेज मंगल पांडे शट डाउन हिज इंग्लिश ऑफिसर एट बाराकपुर. 29 March 1857 मंगल पांडे शट डाउन हिज इंग्लिश ऑफिसर एट बाराकपुर. Viceroy Lord Canning read the Victoria Proclamation on the 1st November 1858 in Darbar at Allahabad. Allahabad रे कौन लॉर्ड कैनिंग जो विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन से कौन रीड करथिले केबे ना 1st November 1858 रे. After the introduction of permanent settlement by application of days, some जमींदार lost their estate. सनसेस्ट लॉ सुजेस्ट टाइम द्वारा कौन किसी जमींदार कौन निजर जो किसी जमींदार से मैंने कौन आफ्टर द इंट्रोडक्शन जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस है तापर एप्लिकेशन ऑफ सनसेस्ट सुजेस्ट टाइम द्वारा जमींदार मैंने किसी निजर माने स्टेट्स जो थिला तांकर किछि लॉस्ट करथिले बा हराई बसथिले. द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1793. 1793 मसीह रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होइतिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चार्टर एक्ट ऑफ देश एंड देश subsequently that of this and end the monopoly of the East India Company of trade in India. The Charter Act 1813 and subsequently that of 1833 ended the monopoly of East India Company on trade in India. The first railway line in India connecting Desh and Desh was laid in 1858. The first railway line Bombay and Thane was laid in 1853. During the Governor Generalship of Desh, the railway line was first laid in India. Lord Dalhousie. During the Governor Generalship of Lord Dalhousie, the railway line was first laid in India. In this year, Kanhu and Sidhu revolt against British rule. In 1855, Kanhu and Sidhu revolt against British rule. In this village of West Bengal, Jittu Santhal revolt. In Malda village of West Bengal, Jittu Santhal revolt. The Kondos from Desh joined the Pike Rebellion. The Kondos from Gumusa joined the Pike Rebellion. After the Pike Rebellion,
Days were appointed in local service Odias. तो पाइक रिबेलियन पर ओडिया माने लोकल सर्विस भाव अपॉइंटेड हेले. आफ्टर पाइक रिबेलियन देश लैंग्वेज वर एबोलिश्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ओडिशा. पारसी लैंग्वेज कौन एबोलिश हो जाता कोर्ट ऑफ ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट रिवोल्ट 1857 has been termed as the sepoy movement by Dutch historians and British historians. They said the 1857 revolt was a war of independence against the British. Surendrannath Sen. Days had introduced the dual government. Robert Clive had introduced the dual government. Next, Days introduced the subsidiary alliance. Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance. The doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. And doctrine of lapse से कौन लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा इंट्रोड्यूस होता है. द विडो रिमेरिज एक्ट विवाह पुनर्विवाह आईन ब्रॉट इनटू फोर्स बाय लॉर्ड डेलहाउसी. Woods dispatch came into from during Lord Dalhousie. Days introduced permanent settlement. Lord Cornwallis introduced permanent settlement. Before the Enfield rifle, Days rifle was used by British India. Brown dress. मंगल पांडे वर्कर सिपाही एट बाराकपुर. मंगल पांडे कौन गोटे बाराकपुर सिपाही भाव कार्य करते. नेक्स्ट क्वेश्चन Days was declared as empire during the Great Revolt of 1857. तो 1857 जो ग्रेट रिवोल्ट विद्रोह होता से कि एम्पायर मैंने डिक्लेयर किया ना बहादुर शाह जाफर बहादुर शाह सेकेंड was declared as empire during the Great Revolt of 1857. Days guided the revolt of 1857 at बिहार. तो बिहार कौन कन्वर सिंह बिहार में जो रिवोल्ट होता है गाइड करते. This was the last governor general first viceroy Lord Canning. In Days the East India Company rule ended in India 1858 रे East India Company rule कौन इंडिया शेष होता बा समाप्ति करथिला. In Days दरबार the proclamation of Queen Victoria was read Allahabad. In Allahabad दरबार the proclamation of Queen Victoria was read. From which novel idea regarding the सन्यासी रिवोल्यूशन क्रिएटेड आनंद मठ. तो आनंद मठ नोवेला आम कौन आइडिया रिगार्डिंग कर ना सन्यासी रिवोल्यूशन इज गैदरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हाट अरेंजमेंट द ब्रिटिश कुड कलेक्ट रेवेन्यू एज पर देयर विम्स. बाय डुअल गवर्नमेंट एग्रीमेंट. बाय व्हाट डुअल गवर्नमेंट एग्रीमेंट द ब्रिटिश कुड कलेक्ट रेवेन्यू एज पर देयर विम्स. In which year the British killed 150 सन्यासी एंड फकीर सेट नाटोर 1871. तो 1871 कौन ब्रिटिश कौन करते ना 150 जन सन्यासी और फकीर को नाटोर कौन हत्या कर देते. हु सुप्रेस्ड द रिबेलियन एट हल्सीपुर. कैप्टेन वेल्डिंग suppresses the rebellion at हल्सीपुर. Who was the great supporter of सन्यासी रिबेलियन एट हल्सीपुर ना फाते शाही was the great supporter. माने फाते शाही गोटे ग्रेट सपोर्टर थे कौन सन्यासी रिबेलियन. By which name the Santal rebellion is famous? Hull. The Santal area on the foot of hill Ras Pihal was known as Damon e Koho. In which year Khewar or the first Santal rebellion took place? 1803. In 1803 year Khewar or first Santal rebellion took place. तो 1803 रे first Santal जो rebellion took place होइतिला. Whose son was कान्हू. चालू Santal son was कान्हू. तो कान्हू कौन ना चुल्लू Santal रो पुतली. Sidhu belongs to which village or from which village did Santal rebellion start? तो भगवान दिही बिलोंग्स टू सिद्धू कौन ना सिद्धू भगवान दिही विलेज बिलोंग्स करते आउ यही विलेज सांताल रिबेलियनटा कौन स्टार्ट होता. हु वेर टर्म्ड अज दिक्कू बाय सांताल को दिक्कू किए होते ना जमीदार मानू सांताल माने दिक्कू कहते. हु केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ठाकुर. ये ना कान्हू केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ठाकुर. Name the Santal leader of Malda who revolted against the British. Jitu. Name the Santal leader of Malda. Jitu revolted against the British.
When did the Sipai Mutiny take place? 1857. The Sipai Mutiny take place. Next question. In which year railway was introduced in India? In 1853, railway introduced in India. Who had first started the Great Revolt of 1857? Mangal Pandey had first started the Great Revolt of 1857. Who was the Emperor of Delhi during the Great Revolution of 1857? Bahadur Shah II was the Emperor of Delhi during the Great Revolution of 1857. Who guided the revolt at Lucknow? Hazrat Mahal guided the revolt at Lucknow. Who led the revolt at Jhansi? Lakshmibai led the revolt at Jhansi. तो हाजरत महल कौन लखनऊ रिभोल्ट को जो विद्रोह को माने गाइड करते आ लक्ष्मीबाई कौन ना झांसी रे जो विद्रोह होता ताहाको गाइड करते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. हु गाइडेड द रिभोल्ट बिहार? तो बिहार पुणी किए ना बिहार कन्वर सिंह आ कानपुर थे नाना साहेब. Which year did Queen Victoria's proclamation was made? 1858. In which year the permanent settlement took place? 1793 रे permanent settlement हेतिला. Name the Governor General who introduced permanent settlement in India. Lord Cornwallis. Lord Cornwallis Governor General introduce करथिले कोन permanent settlement को introduce करथिले. Who had made 5-year settlement with जमींदार सर जॉनसोर? Made 5-year settlement with जमींदार सर जॉनसोर कोन ना 5 वर्षिया जो बंदोबस्त को जमींदार सहित कोन सेटलमेंट करथिले. Who had recommended 10 years plan of the land revenue settlement? Sir Johnson recommended 10 years plan of the land revenue settlement. In the permanent settlement, which method was adopted? East India Company collect tax from peasants through जमींदार. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन ना peasants मान को collect tax करले कहा दर ना जमींदार को द्वारा से माने tax को collect करले. यह दिला permanent settlement रो मेथड टा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Sunsest law is associated with कौन permanent settlement. सूर्यास्त आईन हिला कौन associated कहा जातले ना permanent settlement सहित associated थिला. Who had started Raudari बंदोबस्त system? Sir Thomas Munro started Raudari बंदोबस्त. Who distribute land महलवार system? जमींदार और village team distribute the land in महलवार system. Who was the first exponent of the drain of wealth in India? Dada Bhai Naroji was the first exponent of the drain of wealth in India. Next question. Who was the Governor General of India at the time of outbreak of Sipai Mutiny? Lord Canning. From which place the revolt of 1857 started? Barakpur. Barakpur place the revolt of 1857 started. Who took the leadership of the revolt of 1857 at Kanpur? Nana Sahib. Name the Jamidar of Jagdishpur who fought against the British in revolt 1857. Conwar Singh. Who introduced doctrine of lapse? Lord Dalhousie introduced doctrine of lapse. Who introduced subsidiary alliance? Lord Wellesley. Our permanent settlement introduced by Lord Cornwallis. Next question देखिए. One of the basics of whose recommendations permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis? Sir Johnson को recommendation द्वारा permanent settlement टा कौन Lord Cornwallis को द्वारा introduce होइतिला. Which novel throws the light on Sanyasi rebellion? Ananda Motto was the novel throws light on Sanyasi rebellion. In which year dual government prevailed in Bengal? 1765. Dual government prevailed in Bengal. When did the East India Company get Diwani? The 1765 East India Company get Diwani. By what law the Jamindars were confiscated? Na Sunset law. Jamindars were confiscated. Next question. By what name the colonial historians termed the revolt of 1857? Sipai Mutiny. By what name Sir James Quaton termed the revolt of 1857? Sipai Mutiny. The next question. By what name B.D. Sabhakar called the revolt of 1857 first war of Indian independence? What does R.C. Majumdar tell about revolt of 1857 and first war of Indian independence? In which year Wool's dispatch was implemented? 1854 Wool's dispatch implemented होइला. Next question. What was the immediate cause of the great revolt 1857? Na use of infantile rifle. The infantile rifle
इनफिल्ड जो आम 2 मास क्वेश्चन डिस्कसन करवा से कहि जे इनफिल्ड राइफल मैंने कौन ना इनफिल्ड राइफल द्वारा जो माने मेन कारण था जहाँकि 1857 मसीह कौन विद्रोह होता माने इनफिल्ड राइफल को चलाया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वाज द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड बाराकपुर वाज द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे which regiment मंगल पांडे belongs to मंगल पांडे कौन ना बाराकपुर टू बिलोंग करते who had direct the सिपाही मुतनी एट लखनऊ ना बेगम हाजत महल was had direct सिपाही मुतनी एट लखनऊ who was declared as the emperor of Delhi during the revolt of 1857 Bahadur Shah II was declared as the emperor of Delhi during the revolt of 1857 who was the able minister of Nana Sahib Tantia Tope was the able minister of Nana Sahib Tantia Topenଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ who had taken the leadership of ସିପାହୀ ମୁତନି at ଝାନ୍ସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ taken the leadership of ସିପାହୀ ମୁତନି at ଝାନ୍ସୀ who had lead the revolt of 1857 at Bihar conversing lead the revolt of 1857 at Bihar. Next question from Odisha who had taken leadership in revolt 1857 सुरेंद्र साई और चाखी खुंटिया दी जन कौन ओडिशा जो रिवोल्ट होता 1857 मसीहा रिवोल्ट विद्रोहर नेतृत्व नहीं टू विच प्लेस वाज बहादुर शाह सेकेंड भानिश पोर्ट बिहार कौन ना बहादुर शाह भानिश होते आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास इन 1858 1858 जो ग्रेट रिवोल्ट 1857 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट गोटे पास करते आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 विद्रोह पर हु हैड टेकन द चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनियन जो कौन बड़ टेकन एडमिनिस्ट्रेशन कौन चेंज करते विथ द एग्जीक्यूशन ऑफ दीवानी इन 1765 हु कलेक्टेड द रेवेन्यू इन इंडिया ना ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर चार्टर एक्ट पास चार्टर एक्ट के 1833 पास होता हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ना दादा भाई नारोजी हेले कौन ऑथर जो को बुक ना प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन विच रिबेलियन देवी चौधरानी टुक लीडरशिप सन्यास रिबेलियन रे कौन देवी चौधरानी टुक लीडरशिप नेतृत्व नहीं in which village rebellion Santalos assembled on 30 June 1855 in भगवान दे विलेज तो ये विलेज रो ही सांतालो जो रिबेलियन टा कोन स्टार्ट होतिला by which name Sir James Outram termed the revolt of 1857 a combined conspiracy of Hindus and Muslims. What did Benjamin Disraeli term the Great Revolt 1857 national uprising? Next question. By what name B.D. Sabharkar called the revolt of 1857 first war of Indian independence? R.C. Mukherjee tell about revolt of 1857 it was a freedom movement of India direct against the British rule. तो R.C. मजुमदार कौन कहले एटा गोटे प्रथम गोटे संग्राम स्वाधीन संग्राम जहाँकि कौन इंडियन माने ब्रिटिश मान विरुद्ध इंडिया डायरेक्ट विद्रोह करछि who had introduced dual government in 1765 रॉबर्ट क्लाइव 1756 मसीह dual government को इंट्रोड्यूस करते नेम द गवर्नर जनरल हु हैड ऑर्डर द रॉयल फैमिली फ्रॉम क्वाइट द रेड फोर्ट आफ्टर डेथ ऑफ फारुकुद्दीन लॉर्ड कैनिंग हु हैड एबोलिश्ड सती सिस्टम विलियम बेंटिंग एबोलिश करते कौन सती सिस्टम हु हैड इंट्रोड्यूस विडो रिमेज एक्ट डल डेड हाउस इन विच ईयर द रिलीजियस Disabilities Act passed 1856 रे Religious Disabilities Act कौन पास होइथिला Who was the declared as the Empire of Delhi during revolt of 1857 Bahadur Shah Jafar from Odisha who had taken the leadership in the revolt of 1857 Surendra Sai who in the pass of Government of India Act 1858 मसीह कौन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट कौन पास होता व्हिच नोवेल थ्रू द लाइट ऑफ सन्यासी रिबेलियन नोवेल ऑफ आनंद मठ जो सन्यासी रिबेलियन कौन से जो विषय कहूँ मैंने आम किसी उदाहरण धारणा दूसरी इन व्हिच नोवेल आवर रेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फाइंड्स प्लेस इन द नोवेल आनंद मठ हाउ मेनी विलेजेस वेर इंक्लूड इन डामिन इन आईकोही एरिया 1473 villages are were included in Dhamin Ekohi area. Next question,
which Santalos were forced to collective which crops in their field indigo crops. By what the name first Santal rebellion was known? Khewar by name. Khewar name the first Santal rebellion was known. From which village the first Santal rebellion was started? कौन एटा भगवान देही. By what name the Khurda rebellion was famous? Pike rebellion. By what law the Jamidars were confiscated? By sunset law. In which your Lord Dalhousie made quinquennial settlement 1777. When did Sir John Shaw started 10 years land settlement 1789? कौन Sir John Shaw कौन स्टार्ट करथिले ना 10 वर्ष जमी बंदोबस्त स्टार्ट करथिले. Which the acquisitions of Diwani in 1765 who collected the land revenue in India? Jamidars. Which system was known as village system in Punjab? Maholar system was known as village system in Punjab. तो ये कौन यूनिट 2 वन मार्क्स क्वेश्चन आर नेक्स्ट यूनिट 3 में डिस्कस शेयर करबी. तो जब आप पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छे जॉइन हूँ आईपरी वीडियो आगू पोस्ट करी. तो से आप चैनल जोड़ी जातु. तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.